Hello everyone, I am Harish Chandan. I have taught chemistry from 91 to 2026 and presently I have retired as principal. So now I have launched my channel, that is Chandan Sir Chemistry Wala, for students of 11th and 12th. Yesterday I have taught about basic concept, that is matter and its composition. Presently today I will be talking about chemistry and its various branches. So as you know, chemistry is a science which deals with matter, its composition and its properties. That is known as chemistry. So today I am going to tell you about the various branches of chemistry. So as you know, there are three main branches of chemistry. That is, first one is inorganic, second one is known as organic chemistry, and third main branch is known as physical chemistry. So these are the main three branches of chemistry, and most of the universities, they are providing post graduation in chemistry by imparting specialized education in any of these three branches. So first of all, I'll explain you inorganic chemistry. So inorganic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of metals, non-metals and metalloids, and specifically their minerals. So that is known as inorganic chemistry. Second one, most important one, I have done my post graduation with specialization in this organic chemistry. So organic chemistry is very important branch which is dealing with the compounds of carbon, basically the covalent compounds of carbon and its derivatives. We say that the study of hydrocarbons and their derivatives, that is known as organic chemistry. Then third one is physical chemistry. Physical chemistry is, as I know, it is the mathematical part of chemistry. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली मैथमेटिकल पार्ट जिसको आप बोल सकते हैं. इट इज डीलिंग विद फिजिक्स दैट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री. मैटर के साथ जितने भी कंसेप्ट्स हैं जो कि एनर्जी के साथ रिलेटेड हैं और डिफरेंट फार्मूले जो हम लोग डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री में, उनकी डेरिवेशन करते हैं, दैट इज कवर्ड इन दिस फिजिकल केमिस्ट्री. So these are the three main branches of chemistry, and there are certain other branches of chemistry most of people they does not know. So I'll be telling you about them also. First is industrial chemistry. So industrial chemistry is, as the name is indicating, industrial chemistry means the chemistry which is dealing with the various chemical processes which are being used in various industries. Like nearest we have got National Fertilizer Limited, where fertilizers are being manufactured, that is using various processes of chemistry to produce the different type of fertilizers. Similarly, other branches of chemistry, we can say we are having biochemistry. So what is biochemistry? As the name is suggesting, bio means the study of living organisms. So biochemistry, as you know, the chemistry which is used or which is associated with the living organisms. Like we know that we are eating food and डाइजेशन ऑफ फूड इज टेकिंग प्लेस. सो डाइजेशन में जो भी केमिकल प्रोसेसेस यूज होते हैं, जो भी ब्रांच उसके साथ केमिस्ट्री की डील करती है, उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं. डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेसेस जितने भी हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में. सिमिलरली वी हैव फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री.
नाउ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, आप सबको पता है, हम लोग वेरियस फार्मेसी की बात करते हैं, दवाई लेने जाते हैं, तो वहां पे दवाइयों के साथ जो भी रिलेटेड केमिस्ट्री है उसको हम लोग बोलते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली हम लोग बात करते हैं कोर्सेज लाइक डी फार्मा, बी फार्मा, वो हम लोग उसमें स्टडी करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है? सरफेस मींस जो ऊपर का लेवल होता है, सतह होती है, उसको बोलते हैं सरफेस। सो बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे होती हैं, उसको हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में, उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। जैसे बहुत सारे केसेस में हम लोग बात करते हैं कि रिएक्शन की स्पीड हम लोगों ने बढ़ानी है, तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस व्हिच स्पीड्स अप द प्रोसेस। तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कैटालिटिक एक्टिविटी जो है that is taking place on the surface of some other substances। उसमें हम लोग अलग अलग concepts पढ़ेंगे, adsorption, absorption, etc. So that will be studied in this surface chemistry. Then we have another branch, very important one is nuclear chemistry. So nuclear chemistry is, as the name is indicating, nuclear chemistry is chemistry dealing with nuclear science. You might have heard about the concept of atom. In atom, very important part present in the center is known as nucleus, and nucleus is having protons, neutrons, etc. So the chemical processes which are associated, which are related to the nucleus, are studied in nuclear chemistry. So these are some of the branches of chemistry. So today I am just finishing my topic at this point. Hope you are enjoying my way of teaching. उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई हुई बातें अच्छी लग रही हैं और समझ आ रही होंगी। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक से चलूँ, धीरे धीरे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ चलेंगे। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और सभी बच्चे इस चैनल को आगे से आगे भेजें, सब्सक्राइब करें इसको और अपने साथियों को भेजें ताकि वो भी इस चैनल से पढ़ के फायदा उठा सकें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।